Before we begin, I would just like to tell you why you should refer to this video. I'm currently working as a software engineer specifically in the AI domain, जहाँ पर मैं NLP projects पे काम कर रहा हूँ. I studied in IIT Bombay, but my major education was in IIT Hyderabad, where I specifically studied artificial intelligence. So at any point of time, अगर आपको doubts आ रहा है किसी भी topic में, या फिर अगर आपको कुछ और चीज़ अच्छे से समझनी है, please feel free to comment under this video. I'll be happy to help you there. So without wasting any time, let's just begin with today's session, जहाँ पर हम लोग AI का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे. तो व्हेन वी टॉक अबाउट AI, हमारे दिमाग में यह आता है कि कोई भी डिवाइस कितनी सारी कैलकुलेशंस कर रहा है. इट इज़ एबल टू डू सो मेनी थिंग्स विच ह्यूमंस आर एबल टू डू. लेट्स से हम लोग जब टीवी यूज़ कर रहे थे 1930s में, उस टाइम पे टीवी का सिर्फ एक काम होता था, टू डिस्प्ले पिक्चर एंड डिस्प्ले साउंड. बट एज वी मूव्ड ऑन टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, जैसे 2010s आया, 2020s आया, वी गॉट स्मार्ट टीवीज. अब आपका टीवी वाईफाई से कनेक्ट होता है, उसमें नेटफ्लिक्स है, आप उस पर गेम्स खेल सकते हो. नाउ दिस पाथ फ्रॉम अ वेरी सिंपल टीवी टू अ मच मोर एडवांस्ड टीवी, यहाँ पर आपका जो डिवाइस है इट स्टार्ट्स गेटिंग स्मार्टर. अ वेरी गुड एग्जाम्पल वुड बी टू लुक एट योर फोन. couple of us or most of us would have smartphones with us. उसका एक प्राइमरी काम तो यही है कि हम एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं. कहीं पर भी हम लोग फ़ोन उठा के सिर्फ वी जस्ट नीड टू डायल अ नंबर एंड वी कैन कॉल अप एनी ऑफ आवर फ्रेंड्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर फीचर्स विच आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन आर स्मार्टफोन्स, जैसे नेविगेशन. अगर आपके पास गूगल मैप्स है, यू कैन जस्ट पुट एनी एड्रेस एंड आपको वहाँ का पूरा रूट पता चल जाएगा कि आप कैसे पहुँच सकते हो उधर. अगर आपके पास स्पॉटिफाई या फिर यूट्यूब है, आपको ये एप्लीकेशन सॉन्ग्स रेकमेंड कर सकते हैं. अगर आप इंस्टाग्राम या स्नैपचैट यूज़ कर रहे हो, आपके फेस पे फिल्टर्स लग सकते हैं ऑन योर ऑल सेल्फीज. एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम कॉलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, आपसे आपके हेल्थ रिलेटेड भी चीज़ें आप फ़ोन पे कर सकते हो. दैट इज़ द रीज़न वी स्टार्ट कॉलिंग इट द स्मार्टफोन. बट स्मार्टफोन स्मार्ट बना कैसे? इट ओनली डिपेंड्स ऑन द साइंस एंड इंजीनियरिंग जो इन सब के पीछे जाती है. नाउ जॉन मैकार्थी वाज द फर्स्ट वन टू कॉइन द टर्म, जिन्होंने फर्स्ट बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक चीज़ है. इट इज़ सिंपली अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मशीन्स और स्पेशली योर कंप्यूटर प्रोग्राम्स मोर इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट इन टर्म्स ऑफ कि ये थोड़ा ह्यूमंस जैसे बिहेव करने लगे. अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स जो हम लोग देखते हैं लेटेस्ट AI में क्या क्या है. IBM वॉटसन, इट्स एन AI इंजन. अगर आप इसको कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, इट विल गिव यू एन आंसर. नाउ दिस इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ NLP. द सेकेंड एग्जाम्पल इज सोफिया. इट इज अ ह्यूमनॉइड रोबोट विच कैन कॉन्वर्सेट विद यू इन मल्टीपल लैंग्वेजेस. अगर आपने इन दोनों के बारे में नहीं भी सुना है, आई एम अज्यूमिंग आपने इन तीनों के बारे में तो पक्का सुना होगा. गूगल मिनी, Amazon Alexa, Siri. Now you're able to tell your phone or maybe these devices ki I want to put an alarm for tomorrow, or maybe just play this song. All these devices actually use your AI technology. But how is this AI technology possible? आप ये सब जो devices बना रहे हो, ये कैसे possible है? For that specific purpose, let's just look at the history of AI. कहाँ से ये टर्म स्टार्ट हुआ एंड कब से ये एक्चुअली एडवांसमेंट्स होने लगे. इट स्टार्टेड इन 1950s जब कंप्यूटर्स बनने लगे. यू स्टार्टेड कोडिंग. ARPANET अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था तो. लेटर ऑन जॉन मैकार्थी सेड वी कैन मेक कंप्यूटर्स, मेक प्रोग्राम्स मोर इंटेलिजेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग सम ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स. फिर उसके बाद आपके कंप्यूटर्स फास्ट होने लगे, तो आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है. उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे थोड़ा और काम होने लगा एंड करेंटली वी आर इन अ बेस्ट फेज ऑफ AI. सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट देयर इज मच मोर टू कम. अभी लोगों को लगता है दैट वी आर फाइनल इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ AI, और मे बी वी हैव डन अ लॉट इन द फील्ड ऑफ AI. बट टू बी ऑनेस्ट, वी आर जस्ट एट द स्टार्ट, एट द बिगिनिंग ऑफ AI रेवोल्यूशन. वी विल लुक एट अ कपल ऑफ थिंग्स कि AI कैसे काम करता है. बट बिफोर दैट, let's try to solve this question. And by the time I said this, I think most of you would have written down the answer or noted down the answer. It is 64. How is it 64? A simple thing would be to look at the first digit, it is 2. The second digit is 4.
हम लोगों ने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया. सो ईच ऑफ दीज डिजिट्स इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड हम लोगों को ये पता चला क्योंकि वी लुक्ड एट ऑल द डेटा बिफोर. नाउ ये जो हमारा थॉट प्रोसेस था इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि यहाँ पर 64 आंसर आना चाहिए, दिस थॉट प्रोसेस इज ट्रांसफर टू अ मशीन एंड दैट्स हाउ यू मेक अ मशीन इंटेलिजेंट. नाउ इट माइट साउंड कॉम्प्लिकेटेड बट देयर आर मेनी वेज बाय द यूज ऑफ मैथमेटिक्स कि आप मशीन को ये चीज़ें करवाना सिखा सकते हो. मैथमेटिक्स एज वेल एज पाइथन, इन जनरल एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट वाई डिड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? दिस इज टू टेल यू कि यहाँ जो हम लोगों ने स्टेप्स यूज किए हैं, दैट इज एक्चुअली द डेटा. And using this data, we are making informed decisions. A similar process is also used in making the machines intelligent, where they learn from experience. So this was the experience which you got. So why is this machine learning important? It is actually very important, not because इससे आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करते हो, but आपकी डे टू डे लाइफ में जो नॉर्मल सबसे छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी मशीन लर्निंग से पॉसिबल है. अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हो, देयर इज़ अ फीचर जहाँ पर आपका जो मेल है ऑटोमेटिकली स्पैम या फिर नॉट स्पैम में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज एक्चुअली डन यूजिंग बाय अ मशीन लर्निंग मॉडल. अदर एग्जाम्पल कुड बी, यू आर लुकिंग एट यूट्यूब राइट नाउ. अभी हम लोग AI की वीडियो देख रहे हैं. मे बी इन द इवनिंग और मे बी टुमारो यू स्टार्ट वॉचिंग मैथमेटिक्स वीडियो. दिस वॉज फॉर क्लास 11th. आपने मैथमेटिक्स की वीडियो देखी क्लास 11th. नाउ यूट्यूब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम automatically determines that आप class 11th में हो. That means you might like some of these videos. Science for 11th or maybe JEE for class 11th. ये जो recommendation आते हैं ये machine learning से ही possible है. Another example would be facial detection features जो आपके Facebook में बहुत prominent है. But ज़रूरी नहीं Facebook, even on your Instagram, Snapchat, आप ऑटोमेटिकली फेसेस डिटेक्ट करवा सकते हो अपने किसी भी डिवाइस से. अनदर गुड फीचर ऑफ मशीन लर्निंग इज फेस अनलॉक. नाउ मोस्ट ऑफ द फोन्स, स्पेशली आईफोन, हैज़ अ फीचर जहाँ पर आप सिर्फ फ़ोन को अपना फोटो दिखाओगे, फोटो नहीं एक्चुअली अपना फेस दिखाओगे, तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है. नाउ दैट फीचर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग. सो नाउ एज यू सी, मोस्ट ऑफ योर डे टू डे थिंग्स आर बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट. Now looking at the definition, you might assume that the definition could be very complex क्योंकि इसमें mathematics use हो रहा है, इसमें coding use हो रहा है. But very simply speaking, that machine learning just deals with programming and mathematics so that all of your technology or your machines start to learn and improve on their own. यहाँ पर learn का एक specific meaning है, जैसे humans learn करते हैं सीख सीख कर. इट डज नॉट एक्चुअली मीन दैट. यहाँ पर हम लोग ये मीन कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग किसी भी मशीन को डेटा प्रोवाइड करते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी मशीन सीखती रहेगी until it will get better with experience. So this is a definition that you can go through, but you don't have to remember it. Now you might also be thinking, अगर प्रोग्रामिंग यूज हो रहा है तो हम लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग क्यों ना बोले इसको? Why do you call it machine learning? So for that specific purpose, you have to understand the difference between normal programming as well as machine learning. So सबसे पहले हम लोग एक कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग, नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं. अगर आप पाइथन सीख रहे हो या फिर आपने थोड़ा भी उस पर रिसर्च किया है या मे बी आपने कोई कपल ऑफ वीडियोज देखे हैं, यू माइट अंडरस्टैंड दैट आप एक इनपुट लेते हो, उसको एक प्रोग्राम में डालते हो एंड यू गेट एन आउटपुट. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच. यू आस्क द इनपुट फ्रॉम द यूजर, यू डू सम प्रोसेसिंग, सम कैलकुलेशन एंड आपको फाइनली आउटपुट मिलता है. इनसाइड मशीन लर्निंग, इनसाइड ML एल्गोरिथम्स, आप मशीन को इनपुट भी देते हो, आप उसको आंसर भी देते हो. नाउ दिस आंसर इज नोन एज द आउटपुट. यू गिव दीज टू थिंग्स टू द मशीन and it compiles the program for you. It might sound a bit difficult at the start, but let's take an example to understand. So conventional programming में हमने बोला कि we are taking input from the user, we are calculating it and giving an output.
A simple example could be, I want to convert the temperature from Celsius to Fahrenheit. We know the formula, we can create a program जहाँ पर ये calculation complete हो रही है. F is equal to C into 1.8 plus 32. We give any temperature in Celsius, जो वो आपका input, it will pass to the program and program will give you the output in Fahrenheit. But this is not the case in machine learning. वहाँ पर हम लोग थोड़ी दूसरी अप्रोच लेते हैं. First of all, we need a lot of data. सिर्फ इतनी वैल्यूज नहीं, we need GBs of data for the training purpose. The step one would be to give an input which will be in Celsius. We take a lot of values, हम लोगों ने वो collect की, फिर हम लोगों ने Fahrenheit values, जैसे 40 का कितना Fahrenheit value होगा, 8, 15, 22 and 38 and so on. For each value, we also give the answer to the machine. And when we pass it to the program, actually not the program, यहाँ पर आपका बीच में ML मॉडल आता है. आपने इन दोनों को कंबाइन करके अपने मशीन लर्निंग मॉडल में जैसे ही डाला, आपको एक प्रोग्राम मिलेगा. Now this program can immediately convert any Celsius value into Fahrenheit. Now one thing to note here is कि आपने कभी ये फॉर्मूला आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल को कभी दिया ही नहीं था. Machine learning automatically determines the formula just based on the inputs as well as the outputs. Now we were talking a bit about machine learning. We started off with AI, but how does ML combine with AI, or maybe कुछ difference है, but इन दोनों में क्या actually common चीज़ है? The thing about artificial intelligence and machine learning is that ML is a tool which is used to get AI or maybe create AI. There are also other ways to get artificial intelligence, but machine learning is a subset of artificial intelligence. It's like saying that if you're talking about cricket, you have ODIs there, you have T20s, you have test cricket. So you can talk about AI like cricket and machine learning as one of the formats of cricket or one of the formats of artificial intelligence. So in one of the previous examples we have seen कि machine learning model create करने के लिए we need to pass some data. हम लोगों को input as well as output देना पड़ता है machine learning model को, so that आपके पास एक program आ जाए. Which means that data would be a very important part of any AI technology, because data के बिना आप कभी AI create नहीं कर सकते हो. So let's take an example. What are the things that you can interpret from this data? I will give you a minute to see the data, see the column names. यहाँ पर क्या क्या चीज़ें available है. We have the name, attendance percent, gender, कितने marks आए थे grade 10th में, and participation in sports. Can you notice a few things? Let's begin with total marks. Let's see सबसे ज़्यादा marks किसको मिल रहा है. 92 is quite high, 88, 97, 85. Now if you see their respective attendance, you might see कि जिन लोगों के marks ज़्यादा हैं उनकी actually attendance भी quite ज़्यादा है, and जिन लोगों की attendance कम है उनके मार्क्स भी एक्चुअली कम आए. सो दिस इज द वन ऑफ द थिंग्स विच यू कैन नोटिस. अदर थिंग्स कुड बी दैट जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं ही इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी स्पोर्ट. जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, अगेन द पर्सन इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी स्पोर्ट. वाई वी आर लुकिंग एट दिस इज, अगर आप किसी भी डेटा को बहुत ध्यान से देखोगे आपको उसमें एक स्टोरी दिख जाती है. यू कैन एक्चुअली से दैट A is quite good at studies because he's not participating in sports, but he's focusing more on studies. Or maybe you can also say that B is also focusing more on going to school and not focusing on sports. That is the reason उसके marks ज़्यादा है. So with any type of data, you can actually extract the story so that आप बाद में predictions कर सको. Talking about data, जैसे हम लोगों ने just पिछले example में देखा, it was in the form of a table.
When we talk about data, it can be of any form. ज़रूरी नहीं है कि numbers या text हो. It can be facts or maybe some set of instructions. Numbers, words, pictures, video भी हो सकती है, audio हो सकता है. And they can be represented by any of the characters, जैसे A to Z, 0 to 9, special characters as well. So now we have a basic understanding कि data क्या होता है. Every information which is around us, fact, news, instructions, everything can be combined in the form of data. So let's look at another example जहाँ पर I'm asking you to input your data, not actually input the data, just have a look at this. अगर मैं बोलूँ आपको कि I need some information about you and you have to fill all these columns, जैसे name, age, address, class, number of friends, अगर आप Facebook पे पोस्ट करते हो या Instagram पे पोस्ट करते हो, number of word documents you have created. So for all of these columns मैं बता सकता हूँ कि साइज ऑफ द फील्ड क्या हो, मतलब बेसिकली लेंथ कितना होना चाहिए हर आंसर का. मैं डेटा टाइप भी बता सकता हूँ कि जो नेम है, नेम के अंदर हमेशा टेक्स्ट आता है, कभी नंबर नहीं आता है. एज में कभी टेक्स्ट नहीं आएगा, हमेशा नंबर आएंगे. एड्रेस कैन बी नंबर्स प्लस टेक्स्ट, राइट. सो अगर आप ये सब डेटा देखोगे ध्यान से, यू वुड बी एबल टू सी दैट द डेटा इज ऑफ टू टाइप्स. There is a structured data and there is unstructured data. Structured data मतलब you can quantify it. Basically आप बोल सकते हो कि आपकी एज है 70 और मे बी योर नेम इज whatever, आपका जो एड्रेस है वो क्या है. बट देर इज ऑल्सो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक टाइप ऑफ फेसबुक पोस्ट और इंस्टाग्राम पोस्ट. इट कैन बी इमेजेस, it can be audio, it can be video. So जिस भी चीज़ को हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं बाय अ वैल्यू, हम लोग उसको बोलते हैं कि डेटा है स्ट्रक्चर्ड, उसके पास एक स्ट्रक्चर है. एंड जहाँ पर हम लोग ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं कि ये 17 इसका वैल्यू है या फिर वैल्यू इसका कुछ और है, दैट टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जनरली होता है इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो. So we have seen how you can define data, data के अंदर क्या सब चीज़ें होती है. And when you feed this data into an ML model, आप बहुत सारी predictions कर सकते हो. We talked about machine learning before. Now machine learning is actually of three types. The first is supervised learning, second is unsupervised learning, and then is reinforcement learning. Now looking at all these words you might get confused at first. अगर आपने AI का कोर्स पहले नहीं किया है, डोंट वरी, विद द प्रोसेस ऑफ दिस कोर्स आप स्लोली इन सारे टर्म्स का मीनिंग बहुत अच्छे से समझने लगोगे. बट फॉर नाउ आई विल गिव यू अ फ्यू टिप्स टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. सुपरवाइज्ड मतलब आप मशीन को बता रहे हो, और मे बी यू कैन टेक एन एग्जाम्पल दैट अ ह्यूमन इज सुपरवाइजिंग द लर्निंग. देयर इज some human part associated. Unsupervised में there is no human part associated. And reinforcement का basic मतलब होता है गलती से सीखना. So we will have a look at each of these with good examples so that आपका understanding better हो जाए. First one is supervised learning. Now supervised learning हम लोगों ने क्या बोला था, that some human touch is necessary. Now in this machine learning supervised model, what I am doing is I want to identify some fruit. I have the data with me जिसमें मैंने already लिखा हुआ है कि that they are apples. I have the data with me. I also know the answer. Right? This is the input and this is the output. Now I feed both of these data into an ML model. एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में मैंने दोनों चीज़ें फीड कर दी. फिर उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन पूछा उसको कि व्हाट डू यू थिंक द आंसर टू दिस इज. नाउ योर मॉडल रिप्लाइज दैट इट इज़ एन एप्पल. सच काइंड ऑफ अ प्रोसेस जहाँ पर आप उसको बता रहे हो कि आंसर्स क्या है, उसको ये भी बता रहे हो कि आपके पास डेटा क्या है, दैट इज नोन एज सुपरवाइज्ड बिकॉज वी आर ऑलरेडी टेलिंग द आंसर.
अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज जीमेल, जहाँ पर हम लोग स्पैम ईमेल वर्सेस नॉट स्पैम में डिफरेंशिएट करते हैं. यू ऑलरेडी टेल द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कि ये टाइप ऑफ मेल्स आर नॉट स्पैम, these type of mails are spam. Your algorithm starts to learn and eventually जब भी उसके पास कोई नया मेल आता है, based on this learning it can tell कि कौन सा मेल स्पैम है और कौन सा मेल स्पैम नहीं है. Now this is kind of a common machine learning algorithm जिसको हम लोग supervised बोलते हैं. Next is unsupervised learning. Now again this doesn't have a human touch. यहाँ पर आपको सिर्फ डेटा इनपुट करना होता है आपके किसी भी मशीन में. नाउ डेटा इज नॉट लेबल्ड, यू डू नॉट नो द आंसर. ह्यूमंस देमसेल्व्स डू नॉट नो द आंसर टू दिस. इट कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स, बहुत जंबल हो सकता है. सो यू गिव दिस डेटा टू एन एम एल मॉडल एंड इट सेज दैट it is able to see a pattern. Can you see a pattern over here? The pattern looks like this. It will classify all the similar objects together. Now again, it does not know कि ये वाला fruit apple है या फिर ये mango है या फिर ये कोई और fruit है. It only can see a pattern between different objects. How is this pattern determined? Is on the basis of similarity कि ये दोनों objects दूसरे से बहुत similar है. So it starts to group them together. This is known as unsupervised because human touch is not necessary. You only have to input the data. So till now, I hope things are clear enough. If you are not able to understand something, just take a pause. Just pause this video, go chill around and come back. With time, you will start to understand that these all learning mechanisms, all ML things are quite easy. And by the end of this course, you will actually be able to create your own facial recognition systems. The third type of learning was reinforcement learning. As I said, it is something like galti se seekhna. With each mistake, it starts to learn. Again, you do not tell the answer. सबसे पहले हम लोगों ने input लिया. And we ask the machine learning algorithm, what is it? It says that it's a mango. Then you tell the machine learning algorithm that wrong, it's an apple. Now the next time you ask the same question to this model, it will tell you that it is an apple. This means कि जैसे ही किसी भी machine learning model ने गलती करी, you teach it at that time yes, this should not be a mango, it should be an apple, and it starts to learn. And next time you ask the same question, it will tell you that it's an apple. Again, these two inputs can be very different. आप different color का apple ले सकते हो, जैसे yellow apple, red apple, probably different size का apple. They are not the same inputs, they are actually different inputs, but their category is the same. So that is why we say that your machine learning algorithm has started to learn. So with this, we also covered a bit about machine learning. हम लोगों ने starting में देखा कि artificial intelligence started around 1950s. उसके बाद machine learning आया. Now the latest thing is actually deep learning. We will talk about that, but before learning about deep learning, we will have to jump into some biology and start to understand कि humans कैसे सीखते हैं. Now, if you look at babies, they can't speak, they can't walk. Maybe by some process, जैसे आपने उनको सिखाना चालू किया चलना या फिर बोलना, they start to learn. But how is that possible? Which of the organs is actually responsible for learning? Yes, you're right, it's the brain. So you can indirectly say that brain is responsible for all the learning which happens inside humans. ब्रेन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और इम्पॉर्टेंट सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द न्यूरल एक्टिविटीज is the brain cell. You can also call it the neuron. आपने शायद 9th या 10th स्टैंडर्ड में अगर आपने बायो लिया था, you would be able to recall some of these things. यहाँ this is a brain cell.
नाउ हाउ इट वर्क्स इज, आपका इनपुट आता है लेफ्ट हैंड साइड से जहाँ पर डेंड्राइट्स हैं, एंड दिस इनपुट is actually just electrical signals. Now when the cell receives the input, यहाँ पर थोड़ा processing होता है, and it gives an output to the next cell या फिर the next organ that it has. Maybe अगर आपने कोई गर्म चीज़ touch की, so you touch it, the input goes to all these cells, they process it and tells the brain that this is pain, and the output is like you अपना हाथ पीछे कर लेते हो. Now somehow mathematicians using their brains came out with a machine learning, not machine learning, actually a normal algorithm which can convert this biological thing or biological term of cell into something mathematical. Please do not ask me how. It is quite uh, it is quite an astonishing thing, but also quite complicated. There is a lot of mathematics behind it, but it also looks kind of similar. आप inputs दोगे इसको, यहाँ पर कुछ processing होगा, and again you will get an output. Now these inputs are in the terms of data. यहाँ पर electrical signals था, and on the other hand it is actually some kind of data. But why are we starting to learn some bio over here? The reason for this is, जहाँ पर भी हम लोग मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे हैं, डीप लर्निंग यूज़ कर रहे हैं, these artificial neural networks acts like a human brain. These software units are also called neurons, and they act like this. आपने कोई भी input दिया, they process it, they pass on the information to the next neuron. Again, they pass it to the output layer. So basically what's happening is, from one neuron to another neuron बहुत ज़्यादा data pass हो रहा है, and between that all the information is being processed which can actually learn from data. If you got confused in between, I would just tell you one thing. Basically mathematicians did one thing, they converted the brain cell, which is a neuron, into a program. Now as the human brain starts to learn, this program also starts to learn. So basically they have just recreated the human brain in terms of computer program. Now looking at ANN, there are a few things which you need to note. These are the definitions which will definitely come in your exam. The first one is the input node. Now input node, as the name suggests, आपको कुछ data provide करना है. It can be an image, it can be video, it can also be numbers. Now this data comes from the real world, and then जैसे ही आपने ये input किया इस layer के अंदर, its another task is it to pass it down to the hidden layers. You might ask, what's a hidden layer? Hidden layer is, with its name, it's actually hidden. No one knows what happens inside. Humans just know that there are a lot of calculations going on in terms of millions and billions. So there is no connection to the real world. यहाँ पर आपका सब processing complete होता है. Now hidden layers can be more than one in number. अगर आप बहुत ही एक simple machine learning algorithm बना रहे हो और deep learning algorithm बना रहे हो, you can only require one layer. But in more complex technologies, अगर आपको बहुत ही difficult task complete करना है, you can have many hidden layers. So we can call it like the brain of artificial neural network. And when all these processing is done, we have an output node or the output layer जहाँ पर final computations होते हैं and we get an output. Simply speaking, we get an input, we get some processing done, and then we get an output. So this is artificial neural network, which is actually a copy of the brain. This artificial neural network works in this way. अगर मैंने एक image दी है dog की, it will take the input of the image, it will break it down to many small pieces in terms of binaries, ones and zeros. फिर hidden layer में कुछ calculations होती हैं, and then finally you get an output which is dog.
बट वाई आर ए एन एम्स सो नेसेसरी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, एंड वॉट इज़ द नीड फॉर ए एन एन these days? So as we talked about deep learning, deep learning is the most advanced form of artificial intelligence which actually uses artificial neural networks. As we said, it's an imitation of the human brain, and we don't have to tell the machine everything. Machine can automatically understand that this is the input given, I need to do this. In terms of machine learning, हम लोगों को थोड़ा फीचर एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है. नाउ दिस माइट बी अ न्यू टर्म, बट यू कैन टॉक अबाउट इट एज सम काइंड ऑफ अ ह्यूमन टच इज नीडेड. In terms of deep learning, you don't have to do that. All the processing is done inside the deep learning model. Now just pause for a while, try to understand what all things were covered in the video. If it gets a bit complicated, you can also make notes. I will also be providing these notes in the Telegram group. You can find the link below this video. Okay, so let's have a look at a couple of examples of deep learning. If you want to know what is the difference between machine learning and deep learning, is a few simple things. Deep learning बहुत ज़्यादा data use करता है because वहाँ पर बहुत ज़्यादा processing की need है. आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं. दैट मीन्स योर मशीन शुड बी वेरी एडवांस्ड. उसमें बहुत सारे जीपीयूज होने चाहिए, बहुत प्रोसेसिंग पावर होनी चाहिए. इट सॉल्व्स प्रॉब्लम एंड टू एंड. देयर इज नो ह्यूमन टच एक्चुअली नेसेसरी देयर. ऑल्सो इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू ट्रेन और लर्न. द कंसेप्ट ऑफ training and testing was covered in 10th standard. You can watch one of the videos which is already present on the channel. I think it's the one with introduction to AI for class 10th. So why is deep learning necessary? Now India has created a lot of things: satellites, air to air missiles, air to land missiles. All of these things actually use deep learning because there is a lot of processing that is needed in order to calculate अगर एक बार take off हुआ, where should the missile go? In mid air अगर हवा तेज चलने लगी, what are the calculations necessary? All those things are done by deep learning. Detection of cancer and other harmful diseases is also possible using deep learning. How is it done? Is by you give an image to the deep learning model and it can say कि यहाँ पर कितना % chance है कि cancer है या नहीं है. It is also done. It is also used in automated driving जहाँ पर self driving cars हैं such as Tesla. We might have heard about those. As well as industrial automation. आपके जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, car making process है, generally they are not done by humans anymore. All the things are actually done by machines themselves and they can think on their own. So we covered all these things, but one of the questions which generally comes in the student's mind, now AI thinks so much, it can do so many tasks, will it ever replace humans or do we have any dangers from AI? So for now, for the next couple of 100 years, we don't have any dangers. We will have a look at what things can AI do right now. We have personal assistants. अगर हम लोग गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हैं, वी कैन सी कि कितना ट्रैफिक है कौन सी जगह पे, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल. वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम्स जो प्रेडिक्ट कर सकता है अगर क्राइम होने वाला है या नहीं. द वे दिस वर्क्स इज, अगर कोई सस्पिशियस बिहेवियर दिखा रहा है किसी भी वीडियो सर्वेलेंस में, द मॉडल विल ऑटोमेटिकली टेल दैट दिस गाय कैन बी डेंजरस. समटाइम्स अगर कोई बैंक के बाहर बहुत टाइम तक वेट कर रहा है या फिर कोई बेंच पे सुनसान जगह पे वेट कर रहा है, द वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम विल मार्क देम एज डेंजरस. सोशल मीडिया सर्विसेज लाइक फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, अगर आप फुटबॉल की पिक्चर्स लाइक कर रहे हो, अगर आप बॉलीवुड की पिक्चर्स लाइक कर रहे हो, इन योर फीड यू विल गेट मोर ऑफ सच पोस्ट्स. दैट इज ऑल्सो यूजिंग AI. ईमेल स्पैम हम लोगों ने एग्जाम्पल स्टार्टिंग में देखा था. प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, इफ़ यूर ऑन Amazon, अगर आपने एक मैथमेटिक्स की बुक ऑर्डर की, आपने फिजिक्स की बुक ऑर्डर की, इट विल ऑटोमेटिकली सजेस्ट यू दैट यू आर अ साइंस स्टूडेंट, you should also buy the chemistry book. Also online fraud detection. So these are some of the things which are made easier by AI. हम लोगों को आइडिया भी नहीं है कि AI हमारे ऑलमोस्ट हर डिवाइस में है. Everything we use during the day has AI in it. But there are still things which AI cannot do.
in terms of social context जहाँ पर humans बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, it's like saying who will win the elections in the next 4 years, or maybe what should the police do if such and such thing happens. और अगर मैं उसको कुछ लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूँ एआई को, इट विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स टिल नाउ, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग विच इज़ एक्चुअली नीडेड. इमोशंस होने चाहिए मशीन में. मशीन शुड अंडरस्टैंड व्हाट सर्टेन टर्म्स मीन. मशीन शुड स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमंस इंटरैक्ट विद ईच अदर. ये सब चीज़ें अभी भी पॉसिबल नहीं है. दैट इज़ द रीज़न ए आई is still not all powerful. It can although help us in a lot of other things. Now, artificial intelligence is a very broad field, but there is one thing common everywhere. It is data. The more data you have, the better and the more efficient AI systems you can make. So all the companies which have a lot of data, say Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Uber, Reliance Industries, all these companies have access to a lot of data. That is the reason जो उनके systems और efficient और accurate होते जा रहे हैं. So you can remember this. It might help you later on, if you're trying to pursue artificial intelligence in any field. So with this, we are actually done with the first unit of artificial intelligence for class 11th. There is still one part left, which was regarding jobs in AI. That part will be shared as notes in the Telegram group. You can join it there. If you found this to be useful, please give it a like. You can share it among your AI 843 friends. And if you need more videos, do not forget to press the subscribe button. I'll be seeing you in the next session. Till then, stay awesome. Bye bye.